Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and today we are going to discuss grammar, right? So, today we are going to discuss Chapter 8, Phrases and Clauses, right? So, you people know about the sentences, right? Sentences क्या होते हैं? They are the group of words with a complete sense or complete idea or complete meaning, right? वो group of words जिसका कुछ complete meaning हो उसे हम कहते हैं सेंटेंस. It start with a capital letter and generally ends with a full stop or the question mark. Okay, now let us come to the phrases and clauses. So phrases and clauses are also some group of words. Okay, some group of related words. Okay, but जब हम phrase की बात करते हैं तो it lacks of subject and verb. ये group of word तो होता है बट इसका ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है एंड इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस. इसका जो एक्सप्रेशन या आइडिया होता है वो कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, हाउएवर इट गिव्स अ लिटिल मीनिंग. लाइक सी द एग्जांपल, ही इज स्टैंडिंग नियर अ वॉल. नाउ नियर अ वॉल गिव्स यू अ मीनिंग दैट वॉल के पास, बट इट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग. ओके, so see the other example जहाँ पर highlighted words are showing the phrases, right? So for the guest in a strange way in red shirt, जो है आपको क्या बता रहे हैं? They are the phrases because they are the group of words, but you know that कि इनका complete meaning नहीं है, ना तो इनके पास subject है और ना ही verb है. Now see the types of phrases. So there are various type of phrases like noun phrase, verb phrase, adverb phrase, adjective phrase, opposite phrase, infinitive phrase, participle phrase, gerund phrase and so. ठीक है, तो लेट्स सी नाउन फ्रेज क्या होता है. नाउन फ्रेज जो होता है इसमें एक नाउन कंसिस्ट होता है एंड दूसरा इट इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज बिकॉज इट एक्ट एज अ नाउन, राइट. नाउन क्या होते हैं? या तो वो सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं. सो नाउन फ्रेज हैज़ अ नाउन इन इट. ठीक है, उसके अलावा दिस वन एक्ट एज सम नाउन. सो सी द एग्जाम्पल, ही इज wearing a red shirt, right? Here a nice red shirt is an object to the verb wearing. Okay, in the second example, a man on the roof was shouting. So here, a man on the roof is the subject for the verb was shouting, right? So noun phrase जो होते हैं यहाँ पर एक noun होता है and few other words हो सकते हैं और ये act करता है as a noun. So it's noun phrase. Now see the prepositional phrase. So prepositional phrase जो होता है, this consists of preposition. ठीक है, with it it contains some other modifier also, right? So ये जो होता है object of preposition होता है. यहाँ पर see the example now, a boy on the roof is singing a song. Okay, so a boy on the roof, it is this phrase has on, right? and boy का ये क्या बता रहे हैं कि where it is singing, right? Now she is shouting in a loud voice. Adverb की तरह काम कर रहे हैं but they are prepositional because they are having preposition in it, right? Now adjective phrase. An adjective phrase is a group of words that function like an adjective. Okay, so he is wearing a nice red. So इधर नाइस रेड जो है वो शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है विथ ब्राउन हेयर. ठीक है, तो ये जो है वो क्या कर रहा है? गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है. सो समवेयर व्हेन फ्रेज इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज where the phrase refers to the verb, then it can be called the adverbial phrase. Okay, so see the example, he behaves in a good manner. In a good manner जो है वो किसे मॉडिफाई कर रहा है? behave को. तो
जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा दैट इज द एडवर्ब फ्रेज. नाउ सी द वर्ब फ्रेज. Verb phrase is a combination of main verb and helping verb. So you can see the example. She has finished her work. Has finished is the verb phrase. Now infinitive phrase. Infinitive जो होता है वो होता है to plus verb in first form, right? So you can see the example. He likes to read books. Okay. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको टू रीड वर्ड मिल रहा है, दैट इज़ एन इन्फिनेटिव. दूसरा, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स, क्योंकि इन्फिनेटिव जो होते हैं वो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, दैट्स वाई दे कैन एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. टू अर्न मनी इज़ अ डिज़ायर ऑफ एवरी वन. सो टू अर्न मनी इज़ हैविंग एन इन्फिनेटिव एंड इज़ को ये सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है, राइट. Now see the gerund. So gerund is also the form of verb, that is its ing form. Okay, so when the phrase has something like ing form of the verb, so it will be called infinitive phrase. I like writing good essays. Okay, so ये noun और object की तरह वर्क कर रहा है because infinitive and gerund both can act as noun. Now see the participle phrase. So participle phrase refers to the phrase consists of present participle, means verb का ing form, but you must know that कि participle is different from the gerund because it modifies and makes the things limited, right. तो infinitive gerund और participle के बीच डिफरेंस ये कि दोनों दिखते तो ing form में है, but gerund act as noun and participle acts as an adjective, right. So see the example. The kids making noise needs food. So making a noise is modifying the kids. Okay, now see the absolute phrase. It is also called nominative phrase. It is a group of words including a noun or a pronoun and a participle as well as any associated modifier. So absolute phrase modifies or gives information about the entire sentence, right. So see, he looks sad, his face expressing worry. So यहाँ पर ये his face expressing worry जो है वो modify कर रहा है looks sad को, right. So these were our phrases. Now let's see the clauses. So a clause is a group of related word. It has a subject and predicate also, okay. But you must remember that कि this is the part of a bigger sentence, okay. So clause जो होता है वो होता तो somehow like the sentence ही है, क्योंकि इसके पास subject भी है and predicate भी है, but it is not the independent one. ये किसी और सेंटेंस का पार्ट होता है, राइट. तो सी द एग्जाम्पल, आई विल मीट हिम इन ऑफिस. द पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस आई विल मीट हिम इज़ अ क्लॉज बिकॉज का सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, ओके. हाउएवर दिस सेंटेंस गिव्स अ कंफ्यूजन बिकॉज इट्स अ सिंपल सेंटेंस, ओके. सिंपल सेंटेंस में क्लॉज एक ही होता है, ठीक है. But when you will go through the other type of sentences, you will find that there are more than one clauses in the sentence. Okay. Now, there are examples regarding one clause sentence, two clause sentence, and three clause sentence. So one clause, the kids were laughing at the joker. Like the teacher asked a question, but no one answered. I like mathematics, but my brother likes biology because he wants to become a doctor. तो clauses जो है किसी sentence में one भी हो सकता है, two भी हो सकते हैं और more than two भी हो सकते हैं. Now let's see what are the type of clauses. So clauses are of mainly two types, main clause and subordinate clause, right. So subordinate clause जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, आपका जो मेन क्लॉज का होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है. सो सी द सेंटेंसेस नाउ.
he is buying a shirt which looks very nice. Here there are two clauses. He is buying a shirt and which looks very nice. So here he is buying a shirt is the main clause. Complete idea है, ठीक है. And which looks very nice is the dependent or subordinate clause here. Okay. Now see the subordinate clause. So subordinate clauses जो होते हैं उनके function तीन तरह के होते हैं. That is the noun clause, adjective clause and adverb clause. According to their function हमने उन्हें नेम दिए. ओके. सो हमने पहले भी phrases में जाना है that noun जो होता है वो क्या होता है, या तो subject या फिर object होता है. So similarly noun clause जो होता है it will act as a noun. ठीक है. So if the clause is having a function like a noun, then it will be called a noun clause, right? Adjective clause, obviously adjective clause जो है तो वो किसी को modify करेगा, describe करेगा for some noun or pronoun, right? And adverb clause refers to verb, so it will modify some verb, some adjective clause or other adverb. Okay, so these are the kind of clauses. Now see the exercises here. So exercises, my first number is identify each item as a clause or a phrase. So remember, when you have a subject and predicate, then ये होगा आपका clause जो आपका only group of words है with incomplete meaning, that is the phrase. Okay. Next B exercise, identify each item as an independent clause or dependent clause, right? So remember that dependent clause has some kind of conjunction, right? जो आपका dependent clause होगा वहाँ पर आपको कोई एक कंजंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है. बट इंडिपेंडेंट क्लॉज में आपको कंजंक्शन नहीं मिलेंगे. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है वेदर द कलर्ड वर्ड इज प्रोपोजिशन और एन एडवर्ब, राइट? क्योंकि कुछ वर्ड्स जो होते हैं दे एक्ट एज द प्रीपोजिशन एज वेल एज द एडवर्ब. ओके. नाउ सी द एक्सरसाइज डी. Here you need to combine two sentences together to make one sentence. Okay. तो आपको accordingly who और that यहाँ पर use करनी है. So whenever only one word is to be changed, I have done in the example only. Okay. But those words that needed more changes, I have written them in the book. Okay. So you need you people should not do the similar. You have to write each answer in the given space. Okay. आप बुक में नहीं करेंगे, आप पूरे आंसर को नीचे दी हुई लाइन पर लिखने वाले हैं. Okay. So this is all for today. Have a nice day. Goodbye. And any doubt is there, if so you can ask me.